Beta, before we jump on to, the graphs related to inequalities, I'd like you to understand first what's the difference between an equation and an inequality. I'm sure you have an idea, but for example, let's say आपके पास है x plus 5 equals, let's just say 9. And here you have x plus 5 is greater than 9. Okay? Looking at them, they look exactly the same. When you solve them the same exact way. So I take away 5 from both sides. ये x यहाँ पे 4 आ जाएगा, and यहाँ पे भी, you take the 5 to the other side and you get x is greater than 4. Now, to solve them, it was exactly the same, but this here means that the above equation is only true if x is 4. So an equation would only be satisfied for one value of x, and in this case that value is 4. Whereas if you look at the inequality, that says that the above inequality is true for any value of x which is bigger than 4. Matlab, this inequality x plus 5 is greater than 9. We are happy if x is 5, we are happy if it is 5.5, we're happy if it is 6, we're happy if it's 7, we're happy if it's 10. So x can have all of these values as long as they are bigger than 4. ठीक है? तो inequality में आपको एक पूरी range of values of x मिल रही होती है, whereas एक equation में you get a single value. ठीक है? तो keeping that in mind, when we make a graph, an equation is represented by a line. For us, curves भी हैं obviously later on, but for us अभी हमने ये सोचना है कि equation हमेशा represent होती है एक line से, and inequality would be represented by a full region. पूरा एक area होएगा on the graph which will be satisfying that inequality, whatever inequality we'd be talking about. To get a better idea, अब जरा देखें, let's say this is the x-axis and this is the y-axis, right? For example, I have an equation y equals 2, let's just say. So मेरा बेटा, remember, whenever an equation is y equals any number, that always has to be a horizontal line. तो अगर हम इस ग्राफ पे y is equal to 2 draw करें, so that would be a horizontal line passing the y-axis through 2. I'm sure you know that. This blue line is what satisfies this equation. Please understand कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है, be it integer or non-integers even, all of those points are satisfying this equation y is equal to 2. If you notice, सबका y coordinate 2 है, ठीक है? Now, if I talk about anything above the line, ये सारा जो region है जो मैंने शेड किया, this region would then be y is greater than 2. अगर ये line y is equal to 2 है तो उसके ऊपर कुछ भी होगा, that is y is greater than 2. And उसके नीचे कुछ भी होगा, all of this region, that would be called the region y is less than 2. So we need to understand that this line is acting as the boundary, which is y is equal to 2. Anything above it is y is greater than 2, and anything below it is y is less than 2. ठीक है? एक और example लेते हैं. Let's say I ask you to draw x is equal to 3 on this graph. x is equal to 3 draw करना है, तो x is equal to 3 ये वाली line होएगी. Vertical line, whenever there's an equation with x is equal to some number and there's no involvement of y, then from grade 8 we remember that it has to be a vertical line.
तो मैंने x इज इक्वल टू 3 पे वर्टिकल लाइन लगा दी. अब anything on the line satisfies this equation, but if we talk about the region to the left of the line, ये सारा region, if the line is the boundary, then all of this region would then be called x is less than 3. And इस line के right side पे जितना भी region है, ये वाला, this region would be x is greater than 3, because if you choose any point in this region, its x coordinate would be bigger than 3. If you choose any point in this region, its x coordinate would be less than 3. So again, the x equals 3 line is acting as the boundary. Anything to the left of it is less than 3, and anything to the right of it is greater than 3. ठीक है. तो अगर कोई कहे कि जी इस रीजन को क्या इनइक्वालिटी डिफाइन करती है, तो आप देखो कि ये रीजन की बाउंड्री क्या है. बाउंड्री है x इज इक्वल टू 3, तो ये रीजन हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 3. अगर कोई कहे इस रीजन को क्या इनइक्वालिटी डिफाइन करती है, तो आप देखेंगे व्हाट इज द बाउंड्री. फर्स्ट आइडेंटिफाई द बाउंड्री and then see is your region less than that boundary or more than that boundary. In our case, this region is less than the boundary, so we write x is less than 3. I hope you understand. एक और example देखते हैं. Now, the two lines I drew, one was perfectly horizontal and other was perfectly vertical. Horizontal के ऊपर वाला greater than होता है और नीचे वाला less than होता है, and vertical के left वाला less than होता है and right वाला greater than होता है. ठीक है. Now, if you have, for example, a slanted line, कहते जी एक लाइन है y is equal to x plus 1. ठीक है. Now, whenever you have to draw a line, you can pick, 2-3 points, plug in the values of x and find the values of y against those values of x. But generally, inequality question में इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती. तो what we do is we simply find out the x intercept and we find out the y intercept. If you look at this equation from our previous studies, we know that इसका y intercept would be 1 because it's y equals x plus 1. And another thing I want you to keep in mind is कि first equation में it was y is equal to some number, there was no x involved. Second equation में it was x is equal to some number, there was no y involved. तो y वाली equation ये वाली जो थी horizontal line, x वाली vertical line. But if you look at this equation, y is equal to x plus 1, इसमें both x and y are involved. So whenever in an equation, no matter how it looks, if both x and y are involved, it's supposed to be a slanted line. And if it's a slanted line, then in the first moment you should get y equals mx plus c in mind. शुरू में आपके पास y equals mx plus c mind में आ जाना चाहिए. If it's a y equals mx plus c line, then obviously we know that this is the gradient and this is the y intercept. And currently this equation is written in y equals mx plus c form, so the 1 has to be the y intercept and there's nothing behind x, which means 1 is the gradient. तो मैं मेरा बेटा एक पॉइंट जाके लगा देता हूँ 1 पे, which is the y intercept. फिर सेकेंड पॉइंट ढूंढना है तो x intercept ढूंढ लें. x intercept ढूंढने के लिए you'll substitute y as 0 because whenever you're crossing the x axis y is 0. So I do y 0 equals x plus 1 and x from there comes out as minus 1. तो मेरा दूसरा पॉइंट बेटा -1 पे आ जाएगा x axis पे, and then all I'm going to do is I'm going to join these two points. I'm going to join these two points and extend the line to draw that line. ठीक है. तो ये मैं रूलर लूँगा और लाइन ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दूँगा. ठीक है. This is how you draw a straight line on a graph. All right. Now that this line is drawn, let me extend it even further. The relevance of this line to the concept of inequalities that we are doing, usko zara samjhe. Okay, let's just leave it. Please understand, beta, that this line is y equals x plus 1. So any point on the line satisfies this equation. ये line अगर boundary है, if this line is the boundary, then anything above the line
anything above the line would simply be y is greater than x plus 1. तो ऊपर वाला रीजन, लाइन के ऊपर वाला रीजन ग्रेटर देन, एंड लाइन के नीचे वाला रीजन, if I'm talking about this region is below the line, this region would be y is less than x plus 1. अब all I've done here is, this is something I'd like you to learn, कि अगर इक्वेशन है मेरा बेटा y equals x plus 1, then the left side is this and the right side is this. We've got the left side of the equation and we've got the right side of the equation. ठीक है? Please remember this and do not forget this, that region above the line जब भी होगा, region above the line जब भी होगा मेरा बेटा, तो the left side would be greater than the right side. You will not rearrange the equation. No matter how it looks in the question, you will not rearrange it, and you will simply do left side is greater than the right side. And if the region is below the line, then you simply do left side is less than the right side. ठीक है? रीजन लाइन से ऊपर है तो लेफ्ट साइड राइट साइड से बड़ी है, रीजन लाइन से नीचे है तो लेफ्ट साइड राइट साइड से छोटी है. ठीक है? Regardless of how your equation looks, don't worry about that, because in some questions they'll give you an equation which looks a little different. It doesn't look in y equals mx plus c form. No need to bring it in y equals mx plus c form. For example, मैं कहता हूँ जी कि एक ये लाइन जा रही है, and I just tell you randomly, tell you that the equation of this line is 2y plus x minus 2y plus x is equal to, let's just say 4 randomly. ठीक है? तो मेरा बेटा अब what is the left side of the equation? The left side of the equation is the 2y plus x. What is the right side of the equation? That's the 4. Now if they've shaded, let's say, this region, if they've shaded this region in the diagram, and they ask you to write the inequality which satisfies the shaded region. तो मेरा बेटा जो इनइक्वालिटी शेडेड रीजन को सेटिस्फाई करती है वो निकालने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि व्हाट लाइन इज एक्टिंग एज द बाउंड्री. वेल, दिस लाइन इज एक्टिंग एज द बाउंड्री. देन आपने ये देखना है, इज द शेडेड रीजन अबव द लाइन और इज इट बिलो द लाइन. इन आवर केस द शेडेड रीजन इज अबव द लाइन. लाइन यहाँ पे है, शेडेड रीजन हमेशा उसके नीचे है. अगर कभी कंफ्यूजन हो रही हो कि शेडेड रीजन ऊपर है या नीचे है, तो पिक एनी एक्स कोऑर्डिनेट and then start going up. If the line comes before the shaded region, then the shaded region is above the line. If the line comes after the shaded region, then the shaded region is below the line. ठीक है? तो in our case, shaded region is above the line. So I'll just pick up the equation of the line as it is, 2y plus x and दूसरी side पे 4, and I'll make the left side greater than the right side. क्योंकि region above the line है, I'll make the left side to be greater than the right side. I hope that makes sense. ठीक है? All right. Now, let's say we have something like this going on. I draw a line, something like this. And I shade this region. ठीक है? And I simply write, find the inequality which defines the shaded region. Find the inequality which defines the shaded region. ठीक है?
तो मेरा बेटा अब तो इक्वेशन ही नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हाउ डू वी टर्न इट इनटू एन इनइक्वालिटी? तो फिर understand that whenever you have a line or lines in a question and you want to find out the inequalities satisfying any given region, तो मेरा बेटा आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको उस लाइन की इक्वेशन फिगर आउट करनी है. सो द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज आइडेंटिफाई the equation of each line. In our case, currently there's only one line. एक से ज़्यादा लाइन्स होंगी तो देखेंगे, बट अभी हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन है. जब एक ही लाइन होती है मेरा बेटा, तो फिर उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी स्लांटेड लाइन, आई होप यू रिमेंबर, वी डू y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी. वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा डायरेक्टली आई कैन सी that the y-intercept is -1. So I don't need to worry about finding out the value of c. I know it is -1 because it's given on the graph. तो जब ग्राफ पे नज़र आ रहा है तो आपको c को सेपरेटली कैलकुलेट करने पे टाइम ज़ाया नहीं करना. Just take up the value of c. So now we know that c is -1. Okay, c is -1. What about the gradient? Gradient के लिए, again we've done this previously in grade 8. I hope you remember. We pick any 2 points on the line, any easy points. कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लो मेरा बेटा. एक फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इफ़ यू लुक एट इट, इट्स x कोऑर्डिनेट इज़ 4 and its y coordinate is 3. So 4, 3. And then let's pick up this point. Its x coordinate is 1 and its y coordinate is 0. 1, 0. अब ग्रेडियंट निकाल लेते हैं मेरा बेटा. हमारे पास आ जाएगा जी, let's call this x1 y1. Let's call this x2 y2. तो बेटा y2 minus y1 over x2 minus x1. 3 minus 0 over 4 minus 1 comes out as 3 over 3 comes out as 1. So gradient is 1. So इस लाइन की इक्वेशन, ये जो लाइन इस क्वेश्चन में बनी हुई है, उसकी इक्वेशन आ गई मेरा बेटा y equals x minus 1. Where did the -1 come from? It was the y-intercept. तो हमने यहाँ पे y equals -1 लगा दिया. अब I have the equation of the line. My next question is the shaded region above the line or is it below the line? The answer is that the shaded region is below the line. तो मैं लाइन की इक्वेशन जो मैंने निकाली है उसको as it is, I'll write down the left and right sides, and since my shaded region is below the line, I would put a less than to the left side and greater than to the right side. This is the inequality which define the shaded region. I hope you understand. ठीक है. अब let's look at a full-fledged question to see how this goes. Okay, let's try this one. ओके, नाउ मेरा बेटा देखो ज़रा, द शेडेड रीजन इनसाइड द ट्रायंगल ABC. अच्छा, जो इनसाइड और शेडेड रीजन खाली ये डिटेल्स हैं वो मैं बताऊंगा बाद में, बट अभी वी नीड टू फोकस ऑन हाउ टू फाइंड द इनइक्वालिटीज. पहले लेट्स फोकस ऑन दैट. सो द शेडेड रीजन इनसाइड द ट्रायंगल ABC इज डिफाइंड बाय 3 inequalities. Okay, one of these is this. Now if you look at it, if you look at the question, it says that the shaded region is defined by 3 inequalities. And अगर आप रीजन को देखें, अगर आप डायग्राम को देखें, तो आपको नज़र आ रही होंगी 3 lines, right? So if it's 3 inequalities, you'll always have 3 lines. If it's 4 inequalities, you'll always have 4 lines. जितनी भी inequalities उसने मांगी होंगी उतनी lines आपको डायग्राम में या तो नज़र आ रही होंगी या आपने बनानी होंगी और एग्जामिनर आपको कहेगा कि बनाएं. ठीक है, तो understand that any line drawn on a graph has an equation. हर लाइन की इक्वेशन होती है. तो आपने ये देखना है कि आपका शेडेड रीजन किन लाइंस से इनक्लोज्ड है. इन आवर केस, इफ यू लुक एट इट केयरफुली, आवर शेडेड रीजन इज इनक्लोज्ड बाय दिस लाइन. दिस इज वन लाइन, मैं थोड़ी सी नीचे बन गई है.
this is one line, the green one, then there's this red one, then there's this blue one. These are the three lines which enclose the shaded region. The first thing, the very first thing you need to do is you need to have the equations of all three of these lines. अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो उसने आपको एक इनइक्वालिटी पहले से ही दे दी है. He's already given you one inequality. So you don't need to worry about that inequality. All you need to know is कि you need to figure out कि ये जो inequality है ये किस लाइन के लिए है, रेड लाइन के लिए, ब्लू लाइन के लिए या ग्रीन लाइन के लिए. For that you have to have knowledge about equations of lines. अगर आप देखो तो इसमें 5.5 आ रहा है ना, y इधर है, x इधर है, ठीक है. तो this line must have a y intercept of 5.5 and which of the three lines, this and this, is crossing the y-axis at 5.5? It's the red line, isn't it? ये red line y-axis को 5.5 पे क्रॉस कर रही है और उसकी इनइक्वालिटी उसने ऑलरेडी दे दी है. सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस लाइन एनी मोर. आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस बिकॉज उसने वो इनइक्वालिटी खुद से दे दी. व्हाट आई नीड टू वरी अबाउट इज द ब्लू लाइन एंड द ग्रीन लाइन. ठीक है, तो मेरा बेटा सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बिकॉज वो सिंपलेस्ट होती है. In this case, the green line is crossing the y-axis at 1. So the equation of this line would be y is equal to 1. Because as we said, horizontal line जब भी होगी तो उसकी equation होती है y is equal to some number and that number is where it crosses the y-axis. तो इस line की equation आ गई y is equal to 1. Equation निकाल ली, बिल्कुल ठीक है. जब इसकी equation निकाल ली मेरा बेटा, my question is, ask yourself, is the shaded region below this line? Or is the shaded region above this line? The answer is that the shaded region is clearly above the y equals 1 वाली line, है ना. तो फिर मेरी inequality क्या बन जाएगी? Inequality बन जाएगी y is greater than 1. हमने कहा जब भी shaded region line से ऊपर होगा left side बड़ी होएगी right side से. तो y is greater than 1. That's one of the two inequalities that we need to give. Okay, fairly simple. अब आप identify करें कि इस ब्लू लाइन की क्या इक्वेशन है. ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें नज़र आ रहा है कि y इंटरसेप्ट 0 है. सो दैट्स दैट एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट के लिए मैं जो 2 पॉइंट्स चूज़ करूँगा मेरा बेटा वो ये वाला 1,2 एक पॉइंट एंड 0,0 द अदर वन. ठीक है, 0,0. नाउ वी डू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. दैट गिव्स यू 2 लिटरली. तो इस लाइन की इक्वेशन होगी मेरा बेटा, ब्लू लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2x. ठीक है, 2x प्लस 0, वी डोंट नीड टू राइट डाउन दैट 0 बिकॉज द y इंटरसेप्ट इज 0 क्लियरली. अब ये लाइन है, इज द शेडेड रीजन अबव द लाइन और इज इट बिलो द लाइन? एंड द आंसर इज सॉरी, शेडेड रीजन अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है? अगर ये बाउंड्री है तो शेडेड रीजन इज बिलो द लाइन. इस लाइन की इक्वेशन वाज मेरा बेटा y इज इक्वल टू 2x. इसकी इनइक्वालिटी बिकॉज द शेडेड रीजन इज बिलो द लाइन वुड बी y इज लेस देन 2x. जब भी रीजन लाइन से नीचे होगा तो इनइक्वालिटी लेस देन ऑन द लेफ्ट साइड होगी. ठीक है, तो y इज लेस देन 2x. दैट्स योर सेकेंड इनइक्वालिटी. सिंपल सिंपल सिंपल. ओके, and then प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये वाले क्वेश्चन अब उसने बहुत ज़्यादा देने शुरू कर दिए हैं. वो शेडेड रीजन पहले सिर्फ शेडेड रीजन निकलवाता होता था, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता था. बट नाउ इफ़ यू लुक एट इट, हाउ मेनी पॉइंट्स विद इन टीजर कोऑर्डिनेट्स लाई इन द शेडेड रीजन? हाउ मेनी पॉइंट्स विद इन टीजर कोऑर्डिनेट्स? अब देखो शेडेड रीजन के अंदर देर आर इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. लेकिन उसने कहा जी कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हैं. ठीक है, कौन से पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हैं? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक ये पॉइंट है, ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट है 2,2. ठीक है, एक ये पॉइंट है 3,2. एक ये पॉइंट है 2,3 एंड इसके अलावा और कोई भी पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो देर आर 3 पॉइंट्स
with integer coordinates in the shaded region. उसने कहा था how many points. तो we write the number of points that are in the shaded region, not their coordinates. अगर वो कहता ना list the coordinates of the points which lie in the shaded region, फिर हम यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते जो 3 पॉइंट्स थे. लेकिन अभी उसने पूछा था हाउ मैनी, सो वी ओनली राइट द नंबर ऑफ पॉइंट्स. नाउ आई एम श्योर यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड कि व्हाई नॉट this point 2,1 and this point 3,1 and this point 4,1. ये पॉइंट्स क्यों नहीं लिए हमने? मेरा बेटा ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स और ये भी इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है, ये भी इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है, ये भी इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है, ये भी इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है. ठीक है. Why did we not take them? Is because now here you have to be careful. आप नोटिस करो हमारी सारी ये जो इनइक्वालिटीज थी, ये जो इनइक्वालिटीज दी हुई है, इट इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट लेस देन और इक्वल टू, greater than or equal to, and less than or equal to. If it is just less than or just greater than, then points on the lines are not included. And अगर होता greater than or equal to or less than or equal to, so in that case points on the line are included. Very very important. ठीक है. यहाँ पे क्योंकि जो एग्जामिनर ने भी इनइक्वालिटी दी थी उसमें लेस देन था, हमने जो इनइक्वालिटीज़ लिखी फिर हमने एग्जामिनर ने जो किया हुआ था उसी को दोबारा से कॉपी किया. और दूसरी बात ये कि अगर आप गौर करें इस डायग्राम में जो लाइंस हैं दे आर डॉटेड, आई मीन स्पेस्ड लाइंस. जब ये ब्रोकन लाइंस होती हैं दैट मीन्स दैट द पॉइंट्स ऑन द लाइन आर नॉट टू बी टेकन, सो वी ओनली पुट ग्रेटर दैन और लेस दैन. तो इसलिए हमने सिर्फ ये 3 पॉइंट्स चूज़ किए. हमने लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे थे, किसी भी लाइन के ऊपर आ रहे हो, वो वाले पॉइंट्स हमने चूज़ नहीं किए. आई होप दैट्स क्लियर. ठीक है. तो वंस अगेन समराइजिंग इट ऑल मेरा बेटा, सबसे पहला काम आपने ये करना है, आइडेंटिफाई what the line is which is enclosing the shaded region, then see what's the equation of that line, and once you've figured out the equation of the line, then see कि आपका shaded region उस लाइन के ऊपर है या उस लाइन के नीचे है. Accordingly put a less than sign or a greater than sign. ठीक है.